So let's start. Acha, let's start off with the very first topic that we have, and it's cell structure and function. Okay. Now, whenever we start off with cells, कि अच्छा, okay, we are okay, cells. अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, the very first thing that we need to know is कि भाई cells होते क्या हैं. So, if anyone could tell me, here, what do we mean by the word cell? What's a cell? एक cell होता क्या है? मतलब, if I were to talk about it, can anyone let me know कि अच्छा cell क्या होता है? Anyone? कोई भी random तुक्का? What's a cell? Sir, it's a basic unit of life. It's a basic unit of life. Very good. ठीक है. देखो, अब अगर मैं इसको इस तरीके से भी कह सकता था कि okay, cell is the basic unit of an organism. ठीक है. लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात हो जाती. यहाँ हमारे पास ये होता कि देखो, cell, the basic unit that I'm made up of, the smallest substance that I'm made up of are atoms and molecules. The very same thing that all the non-living structures or the non-living things are made up of as well. But when we add the word life to it, it specifies कि अच्छा जो भी living organisms है उनका सबसे जो smallest structure है या उनका जो basic unit है वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो cell हो जाता है. हम थोड़ी सी definition इसकी change करेंगे. ठीक है. So your definition is correct बच्चे कि it's a basic unit of life, right? हम लोग कैसे कैसे लिखेंगे, हम बताएंगे कि भाई cells are the smallest structural and functional unit of life, right? Now, if we talk about, sir, where did the word function come from? Why are we talking about a function? Let's say why are we talking about cell as a functional unit of life, right? देखो होता क्या है? If we list down some cells for ourselves, for example, हमने कहा कि okay, if we talk about the mammals or the animals, हमारे पास animals के अंदर red blood cells होते हैं, white blood cells होते हैं, blood के अंदर platelets होते हैं. Animals also have neurons. They also have muscle cells, right? If we talk about the plants have root hair cells, the plants have mesophyll cells, right? So every cell that we have written down here is carrying out a particular function, right? For example, अगर हम लोग red blood cell की बात करें, the red blood cell transports oxygen and carbon dioxide. The white blood cells helps with the immunity. The platelet helps in the clotting. The neurons, जो कि हमारे nervous system के cells होते हैं, they help with the generation and transmission of what we call as the nerve impulses. हम इन सारे cells को आगे जाके पढ़ेंगे. So I'm just scribbling there ताकि we're going to talk about them later. खैर, मसल सेल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन. अगर हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करें, इन द प्लांट्स द रूट हेयर सेल एब्जॉर्ब मिनरल आयंस प्लस वाटर. द मेसोफिल cells carry out photosynthesis. Every cell that we have written down here has a specific function. अब देखो, अब अगर मैं चाहूं कि अच्छा मेरा जो रेड ब्लड सेल है ना, वो नर्वस इंपल्सेस भी जनरेट और ट्रांसमिट करना शुरू कर दे, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट? इफ आई वुड वांट कि अच्छा जो मेरे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दें, अगेन इट कांट हैपन. व्हाई? इज बिकॉज द सेल्स, they are specific in their function. So when we talk about cells being the functional unit of life, what we mean is okay, they're specific, and at the same time they are able to carry out a specific function. यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई मसला? No, sir. All right. अच्छा. Now that we know what cells are structures that have life inside of them. But अगर हम लोग एक चीज कंसिडर करें कि what is that thing that is giving us that life? ठीक है. So let's say कि भाई if a cell is a living structure,
what is basically making the cell a living structure. वो क्या चीज है जो ओके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेसिफिक है लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं है. तो हमारे पास एक फ्लूइड होता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट प्रोटोप्लाज्म, राइट. प्रोटोप्लाज्म अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो हम लोग क्या देखते हैं कि भाई इट्स अ जेली लाइक फ्लूइड with dissolved substances, right? Now, in this fluid, every right reaction is going on that is needed to generate life. ठीक है. इसका नाम बदलता रहता है. विल सी के अभी थोड़ी देर के अंदर विल सी के होपफुली टुडे कि किस तरीके से बदलेगा, क्या, व्हाई इज इट चेंजिंग इन द फर्स्ट प्लेस. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड फर्स्ट. देखो बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे पास इन बायोलॉजी दैट आर रिटन इन लैटिन. ठीक है. If we decode them, if we just translate them into English, it makes it a lot easier. The word plasm right here basically means fluid. The word proto means basic. So what is a protoplasm? It's a basic fluid, a jelly-like fluid with dissolved substances that's basically giving rise to life. Okay? In the exam, they would not ask you for the definition. Don't worry about that. But yes, we need to understand this, what protoplasm is before we move on. ठीक है भाई, यहाँ तो कोई मसला. अच्छा, अब द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज क्लासिफिकेशन. अच्छा, क्लासिफिकेशन क्या होती है? देखो होता क्या है कि व्हेन वी हैव टू टॉक अबाउट मेनी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और व्हेन वी हैव टू कंपेयर मेनी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, देखो एनीथिंग दैट इज लिविंग इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट. अब कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं कि अच्छा यार ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स हैं. ठीक है. अब ये जो हम लोगों ने अम्ब्रेला बना दी एनिमल और प्लांट की, उसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन होती रहती है, फर्दर छोटी छोटी अम्ब्रेलास बनती जाती हैं. फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार ऑल दोस मैमल्स दैट हैव स्केल्स ऑन देम, राइट, एंड आर अंडर द वाटर, दे विल बी कॉल्ड एज फिश. All that animals that have, let's say, external ear, they'll be called as mammals. All the animals that have scales but are on the land, I'm going to call them reptiles. तो इसी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना एनिमल्स की भी आगे की तरफ क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ. इसी तरीके से प्लांट्स होते हैं, कुछ डाइकॉट्स होते हैं, कुछ मोनोकॉट्स होते हैं, कुछ ब्रायोफाइट्स होते हैं, कुछ फर्न्स होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसी तरीके से हम लोग अगर इसके ऊपर क्लासिफिकेशन के ऊपर जाएं तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स है व्हिच विल कॉल एज वर्टिब्रेट्स. व्हाट आर वर्टिब्रेट्स? ऑर्गेनिजम्स विद अ बैकबोन. व्हाट आर इनवर्टिब्रेट्स? ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन. ठीक है. इनके ऊपर जो सबसे बड़ी अम्ब्रेला है ना, जो सबको क्लासिफाई करी और व्हिच इज क्लासिफाइंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट वी हैव, राइट, इनटू टू कैटेगरीज. That's the classification of organisms based on the number of the cells that they have, right. आसान अल्फाजों के अंदर मतलब क्या हुआ कि देखो जब हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना था ना, सबसे पहले चीज हम लोगों ने क्या करी, हम लोगों ने क्लासिफाई करा ऑन द नंबर ऑफ द सेल्स दैट दे पोजेस्ड. अच्छा, क्या इस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल है या क्या इस ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं? आर यू गेटिंग दिस? So whenever we classify organisms on based on the number of cells, तो हमारे पास दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, राइट. एनी गेसेस वो कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे? Plants and mammals. उजैर 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 देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द सेल्स पोजेस्ड. कि एक ऑर्गेनिज्म के पास कितने सेल्स होंगे, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को दो में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. अब लेट मी मेक इट इजियर फॉर यू. हमने क्या करा, हम लोगों ने दो कैटेगरीज बनाई. हमने कहा यार ऑल दोस ऑर्गेनिजम्स दैट ओनली हैव वन सेल, और हम लोगों ने दूसरी कैटेगरी क्या बनाई, ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट हैव मोर देन वन सेल्स. आर यू गेटिंग दिस? तो अब हमारे पास ऑल दोस ऑर्गेनिजम्स दैट आर ओनली मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, उनके पास एक से ज्यादा सेल है ही नहीं.
that single cell organism is thriving as an organism on its own, right? वो खा भी रहा है, वो पी भी रहा है, it's moving about, it's respiring, it's carrying out excretion, so on and so forth, right? But it only contains one cell. Those organisms that are made up of only a single cell, we call them कौन से वाले organisms? Unicellular. ठीक है? अच्छा, those organisms which would have more than one cells, उनको क्या कहेंगे हम लोग? Multicellular. Very good, very good. Right? अच्छा जी. Now, अच्छा, unicellular organisms क्या होते हैं? Those organisms that are made of a single cell, one cell only. ठीक है? Now we're going to talk about 3 examples. अच्छा, multicellular organisms क्या होते हैं? Those organisms that are made of many cells. हमने ये नहीं कहा भाई 2 है 3 है क्या है, हमने कहा भाई एक से ज्यादा है, many cells है बस. ठीक है? अच्छा जी. Now let's talk about examples. Let's talk about examples. ठीक है? So we have 3 examples. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? Let's talk about an amoeba. अच्छा, अमीबा क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. अगर तुम लोगों ने पावर पफ गर्ल्स देखा हो तो उसके अंदर अमीबा बॉयज हुआ करते थे, राइट? देयर आर two more examples. Can anyone tell me कि भाई अच्छा और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हो सकते हैं हमारे पास? So there is one unicellular organism which usually cause diseases. कौन सा वाला होगा? Starts with a B. Bacteria. Bacteria. बैक्टीरिया. ठीक है? और तीसरा हमारे पास क्या आ जाता है? अ फंगस, फंगाई. ठीक है जी. अच्छा, इसी तरीके से let's talk about 3 examples. I'll give you So one. I'll give you unicellular can only be microorganisms. microorganisms. Yes. Okay. Okay. Acha. Multicellular organisms. Acha, again, Uzair, but not all microorganisms. Okay, not all of them. Yes, yes, they will be microorganisms, but not all of microorganisms are unicellular. ये बात याद रखिएगा. ठीक है? For example, if we talk about viruses, viruses are acellular. They're microorganisms, but they are acellular. They don't have any cell. That's why we cannot classify them with uni or multicellular organisms. अच्छा खैर, multicellular organisms example. सबसे पहले हमारे पास आ गए animals, right? All of them, even including humans. और कोई क्लास और कोई organism है multicellular organism? Plants. Plants. Very good. Very good. अच्छा, एक और. I'll give you that one. Fungi. ठीक है? अच्छा जी, अब why fungi? इससे हमें क्या पता लगा? देखो, इससे हमें पता ये लगा कि there are certain fungi, for example, yeast, right? Yeast is a fungus. And how does that fungus exist? That fungus exists as a unicellular organism. ठीक है? Then there is this particular fungi that I personally like on my pizza. कौन सी फंगस है जो पिज्जा के ऊपर खाते हैं? Mushrooms. Very good. Mushrooms. Right? तो देखो, इससे हमें क्या पता लगा? क्योंकि there are certain fungi that can exist as unicellular organism. हमें दिखेंगे भी नहीं. For example, yeast. We have to use a microscope to see the yeast. ठीक है? Then we have certain group of fungi. For example, mushrooms, molds, toadstools that exist as multicellular. Right? उनके अंदर पूरे सेल्स की क्लासिफिकेशन हुई भी होती है, ऑर्गेनाइजेशन हुई भी होती है. यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चों? यहाँ तक कोई मसला? Yes, sir. ऑलराइट. अच्छा, अब देखो बेटे, अब होता क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, दे आर जस्ट देयर इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट? उनके बस एक ही ऑर्गेनिज्म है और वो क्या कर रहा है? इट्स एक्टिंग, इट्स कैरिंग आउट ऑल द functions that a normal organism would, a multicellular organism would.
मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके पास एक से ज्यादा सेल्स होते हैं. Now, for example, if you would consider a human, do you think the humans are only made up of cells? या अगर मेरे पास cells हैं तो would they always remain as cells? नहीं. Sometimes the cells organize themselves, creating larger structures. तो अब अगर हम लोग बात करें कि यार ये जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स कैसे हुआ है? How are the cells organized in a multicellular organism? तो हम लोग क्या देखते हैं कि in a multicellular organism, the cells of कैसी type? Either the same type or either different types. So in a multicellular organism, cells of the same type or cells of different types, they join up together, right? What do? They join up together. Okay. And what cells form when they would join up together? What do we wipe our noses with? Tissues. Tissues. Very good. Right? तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि अच्छा हमारे पास ना cells of different type, for example, red blood cell, white blood cell, platelets, they're joining up together to give me a connective tissue that we call as blood. Cells of the same type, different epithelial cells, they join up together to form a tissue called as epithelium that's present in our skin, inside our mouth, in our ears, right? Yes, sir. All right. Similarly, these tissues of either the same या फिर different types, when they join up together, they form larger structures called as organs. All right. अच्छा, भी जो organs है ना, ये हमेशा अलग होंगे. So different organs. For example, मैंने क्या करा, मैंने arteries ली, मैंने veins ली. Arteries and veins are organs, right? और मैंने एक तीसरा organ लिया heart, और मैंने ना उनको join up कर दिया और मैंने क्या बना दिया, मैंने एक circulatory system बना दिया. So when organs of different types, when they join up together, they give rise to organ systems. And when these organ systems, many different organ systems, the digestive system, the renal, the reproductive, the musculoskeletal, when they join up together, they finally give rise to a kaisa organism, they finally give rise to a multicellular organism. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चों? यहाँ तक कोई परेशानी? So easy stuff, right? All right, now. अच्छा, अब देखिए अब क्या होता है. Out of all of this, what I am most concerned about are the organs, right? सबसे पहले बात ये आती है क्योंकि can we see organs? Can we see organs, by the way? क्या हम लोग organs देख सकते हैं? If I would want, Yes. right? So every time I would look in front of the mirror, I can see my eyes, my ears. If I would open up my mouth, I can see the tongue, I can see the teeth. They're all organs. If I would cut open a bakra, I could see where the heart is, where the digestive organs of the digestive systems are. मतलब कहने का मकसद क्या है? Here, I would not need to put an organ under a microscope to see it. I do not need any sort of visual aid. मैं organs को देख सकता हूँ, using the naked eye. इससे हमें क्या पता लगा कि भाई हमारे पास जो organs है ना, what are they? They are macroscopic. एक चीज होती है microscopic, ठीक है? Microscopic का मतलब क्या हुआ कि भाई I can't see that thing with the naked eye. I need to use a microscope for it, right? Macroscopic क्या होती है? Anything that you can see with the naked eye is macroscopic. ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरी चीज, organs are specific. ठीक है, अब what do we mean by this word specific? ठीक है, अब एक छोटा सा let's talk about something. मुझे ये बताओ, how many of you plan to
go into medicine, become doctors later on, inshallah. If Hiba does, Uzair does. Acha. Let's say, inshallah, in the next how many years? You're in 11th, right? So 11th, and then 1, then add 2 for the A levels, and 10. So let's say in the next 13 years, inshallah, Uzair and Hiba, they, you know, they become very successful cardiac surgeons, inshallah. People with cardiology who are in cardiology, they deal with the heart. अगर हम लोग एक heart का ना oversimplified structure बनाएं, the heart pretty much looks something like this, right? So the heart, it's hollow on the inside so that the blood could pool inside of it. It's muscular on the outside right here so that every time these muscles contract, the heart could act as a pump, forcing all the blood out. ठीक है? Heart का काम क्या है? Heart का यही काम है भाई, pumping of the blood. It does not oxygenate the blood. It does not purify the blood. It cannot do anything except that it pumps the blood, right? अच्छा जी. अब बात ये है कि भाई, let's say Uzair and Hiba, they were working on a case. They had a patient who wanted to undergo a heart transplant. मसला ये हुआ कि भाई इन दोनों के पास ना डोनर हार्ट नहीं था. They didn't have a donor heart. हाँ, उनके पास एक डोनर किडनी पड़ी हुई थी, right? So they decided कि okay, we're going to put a donor kidney and let's see if the person lives. What do you guys think? If It they won't would, work. it won't work, right? Why it won't work? क्यों? It doesn't perform the specific action that a heart does. Very good. ठीक है. So let's take this one step further. Why does the kidney not perform the specific function of the heart? क्योंकि किडनी का ना स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है. अगर हम लोग हार्ट को देखें ना, तो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो उसके फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. देखो, कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये नहीं होता कि टू बी द सेम. कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है थिंग्स दैट गो टुगेदर. फॉर एग्जांपल, लेट्स से भाई, इफ आई वुड put ketchup on fries, it goes together, right? But ketchup on a chocolate ice cream would not go together, right? So ketchup and ice cream do not complement each other. Biryani and raita would complement each other. Biryani and mayonnaise would not. Right? Makes sense, right? तो इसी तरीके से देखो, हार्ट का फंक्शन क्या, पंपिंग ऑफ द ब्लड. तो हम लोगों ने क्या देखा कि अच्छा, इट्स हॉलो ऑन द इनसाइड, ताकि भाई वो सारा ब्लड आके जमा हो जाए, सो द ब्लड कुड पूल इन. It's muscular on the outside, so the muscles can contract, forcing the blood out. Kidney, unlike the heart, is neither hollow, it's neither muscular. ठीक है? अब वो hollow नहीं है तो भाई blood pool in नहीं होगा, muscular नहीं है तो contract भी नहीं कर सकता. Instead, किडनी के पास ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे. They're called as nephrons. They purify the blood. Heart, since it does not have nephrons, it cannot purify the blood, it can only pump the blood. तो हमें इससे क्या पता लगा कि whenever we talk about the specific nature of an organ, we don't talk only about the function, we also talk about कि अच्छा उसका structure भी specific है. No two organs with two different names are going to have different structures. Oh, sorry, similar structures, right? अब बात ये है कि सर, there you go, we want to say something? अच्छा, अब बात ये है कि सर आप इतनी लंबी क्यों कर रहे हैं. सही है वो कि we get what organs are, so but why explain this so much? The reason is that when we say made advancements with the microscope, we realize that we may have made a very small mistake in this definition. In the exams, if they give you the definition for the cells, this is what you're supposed to write. Okay? But we realize that this definition is wrong. Because inside the cells,
we found small or more structures that or specific structures that had a specific structure and which was complementing a specific function. For example, उनमें से एक structure था तो जो कि energy provide कर रहा था, Mitochondria. एक और structure था जो प्रोटीन के लिए कोड कर रहा था, एक ऐसा था जो प्रोटीन बना रहा था, एक एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा था, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा था, एक सेल डिविजन में हेल्प कर रहा था. So we found out, okay, there are smaller structures within the cell that have a function, that have a purpose. They were very much like organs, right? They were very much like organs. Organs का specific function, a specific structure है. इसी तरीके से भाई जो हमें structures मिले cell के अंदर, they also had a specific function complemented by a specific structure. So we started to call them little organs. Little organs did not seem nice, so we converted that word into Latin, and we started to call them organelles. The word organelles practically means little organs. We have a cigar and then we have a cigarette, mini cigars, right? So why little organs? Is because organs are macroscopic. These organelles are microscopic. We can't see an organelle without the help of a microscope. ठीक है? अब ये organelles, अब कौन-कौन से organelles क्या हैं? अभी हम लोग देखते हैं थोड़ी देर के अंदर. अच्छा, एक बात हमें जो पता होनी चाहिए. You're not supposed to learn the definition, but you need to have a concept of it so that if you need to write it in a longer question or 5 mark, 4 mark का सवाल, so you can put that concept in. ये जो organelles होते हैं ना, they work on a phenomena called as division of labor. अब इसका मतलब क्या हुआ? Labor क्या होता है? Labor is basically काम. Let's say if we were in a classroom, a physical classroom, and if we were to do something कि okay, हम लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, हम लोग ना क्लास साफ करते हैं, ठीक है? तो our basic agenda is the cleaning of the class. मैंने कहा अच्छा मैं झाड़ू देता हूँ. I'll ask Uzair to mop the floor. मैंने मंतशा से कहा कि भाई मंतशा, just dust the tables or dust the chairs. मैंने आयशा से कहा okay, how about you clean the fans? Right? I would not make you do any of this, don't worry. खैर, the point is हम लोगों ने अलग अलग tasks अपने साथ अपॉइंट कर लिए. For example, for me it was just sweeping the floor. I'm not doing anything, I'm just sweeping the floor. Uzair was just mopping the floor. He wasn't sweeping, he wasn't doing anything with the chairs, with the, let's say, the fans. He was just mopping the floor. Aisha, she was cleaning the fans. Mantasha, she was dusting the tables. We did not interfere in each other's work, but the collective outcome that came out, because we were each doing different works or labors, is that our class got cleaned. बात समझ में आ रही है कि हम लोगों ने अलग अलग काम करे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक पर्टिकुलर काम क्या हुआ? क्लास साफ हो गई, राइट? इसी तरीके से ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना, टू ब्रिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ द सेल्स. फॉर एग्जांपल, भाई मेरे पास एक सेल, इसका फंक्शन है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना. उसके अंदर कुछ ऑर्गेनल्स होंगे जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहे होंगे, कुछ होंगे जो प्रोटीन बना रहे होंगे, कुछ होंगे जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होंगे वेदर एरोबिकली, कुछ होंगे जो कि एनारोबिकली प्रोवाइड कर रहे होंगे, कुछ होंगे जो सेल डिविजन में हेल्प कर रहे होंगे. हर ऑर्गेनल ने बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर काम अपने पास, जैसे अपना काम के साथ अपना ऑक्यूपाई कर लिया. What is aiding in that calm, in that labor? Its structure. So different organelles inside the cells have divided different work amongst themselves. Right? अब थोड़ा क्लियर हुआ कि भाई ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या चीज है? Yes, sir. All right, now. अब हम लोग क्या करेंगे? Now, what we'll do is we'll talk about these organelles in detail. We're going to compare the organelles in the animal cells and the plant cells, और हम इन organelles की डिटेल के अंदर बात करेंगे, ठीक है? अच्छा जी. So let's start off with the organelles of the animal cell.
अच्छा, we are going to compare the animal cell with the plant cell. Although एक बात याद रखिएगा, we're going to talk about the differences later on. बस एक बात एनिमल और प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में याद रखिएगा, ये जो एनिमल सेल्स हमारे पास होते हैं ना, दे आर इरेग्युलर. इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि they would not have a particular shape. I have animal cells, for example, the red blood cells, which are biconcave. I have animal cells which are rectangular. लेकिन उनके जो कॉर्नर, उनकी जो पेरिफेरीज है, उनकी जो एक्सट्रीमिटीज हैं, वो थोड़ी सी वॉबली होती हैं. Unlike plant cells, which are very regular, right? तो एक मेजर फर्क प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या है कि एनिमल सेल्स आर इरेगुलर एंड द प्लांट सेल्स आर रेगुलर. ठीक है, ये बात याद रहेगी सबको. Now, all right, now moving on. अच्छा, अब एक सेल बनाने के लिए the very first thing that we have to do is that we need to have a boundary. Why? Because ultimately we are going to give life to that cell, right? And what would we need to give that life to the cell? We would need to add the protoplasm, and we would need to make sure that that protoplasm does not leak out, right? Now, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, इस एनिमल सेल को एक बाउंड्री दी, right? So we gave it a boundary like this. This boundary that we have on the cells is what we call as the, क्या कहते हैं भाई इसको? Cell wall or my हाँ, actually, go I on, can- go on. cell membrane, yes. Very good. Cell membrane. अच्छा अच्छा, देखो मैं सवाल पूछता हूँ ना, तो I don't expect you guys to know anything. ठीक है, I just want to know what you guys know. So it's easier building up on what you know. थोड़ा सा brainstorming हो जाती है ना. So that's the only reason. I'm not testing you in any way. Don't worry about that. ठीक है बच्चों. अच्छा जी. Now moving on. So हमारे पास आ गई क्या भाई, सेल मेम्ब्रेन. अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमें दो चीजें पता होना चाहिए. ठीक है, सबसे पहली चीज हमें क्या पता होनी चाहिए कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसका नेचर क्या है. नेचर से मतलब क्या हुआ कि इट्स अ बाउंड्री, राइट? So would it allow everything to move inside the cell, or everything to move out of the cell? नहीं. हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये कैसी मेम्ब्रेन है? इट्स अ पार्शियली, अ सिलेक्टिवली, अ सेमी permeable membrane. It will only allow certain things to come in and certain things to go out. वरना क्या होता है, जो भाई सेल के contents होते हैं ना, that would have leaked out, which is mostly water. We don't want that to happen. दूसरी बात हमारे पास क्या है जो हमें याद रखनी है, what is the cell membrane made up of. ठीक है, देखो मेरे बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर्स है ना, whether we talk about the cells or the structures within the cells or structures that I can actually see, most of them, they are protein. Some of them can be made of lipids, some of them can be made up of carbohydrates as well. तो तीन चीजें, ये चार मॉलिक्यूल्स है जो मुझे बना रहे हैं एज अ ह्यूमन, एज एन ऑर्गेनिज्म. प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, और एक और चीज होती है हम लोग कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए, आरएनए. वो डायरेक्टली तो बहुत सारी चीजें नहीं बनाता है. क्या बनाता है क्या नहीं बनाता वो आगे तुम लोग एएस लेवल में देखोगे. अभी तो फिलहाल इट्स वेरी लिटिल इन आवर सिलेबस. खैर, बात ये है कि the cell membrane could either be protein, could either be lipid, could either be carbohydrate. What do you think this is? Is the cell membrane made up of lipids? Is it made up of proteins, or is it made up of carbohydrates? कोई भी रैंडम तुक्का ऐसी. Lipids. Lipids. Proteins. Ariba says lipids, Hiba says proteins. Aisha, what about you?
So we have one for lipids, we have one for proteins. Proteins. Okay, so two for proteins. Anyone else? Mantasha? कोई भी ऐसी randomly, मुझे पता किसी को नहीं पता. Okay, so Mantasha says protein, so 3 for proteins. अच्छा, the correct answer is notes on carbohydrates. It's lipids. Okay, and there's a very good reason for that. Although there are some protein inside of it, ज्यादातर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन वो किससे बनी हुई है, वो लिपिड से बनी हुई है. अच्छा, what's the reason, what's the logic behind it? Yeah, मेरे 90% of my structures, if I talk about my skin, if I talk about all the enzymes, most of the hormones, the coloring pigment of my skin, the coloring pigment of my eye, they're all proteins. तो सर ये सेल मेम्ब्रेन क्यों लिपिड की बनी हुई है? What's the logic? देखो, Insulation. वो तो एडिपोज टिश्यू है लड़की. चलो देखो देखो, हाँ एक तरह से कह सकते हैं क्लोज बाय रिपल्जन. ठीक है, कोई मसला नहीं उधर, इट्स रिपल्जन. ठीक है, मेरे देखो अगेन, व्हाट्स द नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? इट्स पार्शियली permeable. One thing it does not want the cell to lose is the fluid inside of it. We'll tell you what the fluid inside of it means. It's basically the protoplasm, right? Are lipids soluble in water? No, they're not. They're insoluble in water, right? अगर मेरे पास सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती, मोस्ट द प्रोटीन्स एंड मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर. सेल तो पानी के अंदर डिसॉल्व होता है and would not be cell anymore, right? I needed something to repel that water out, ताकि वो वाटर सेल के बाहर से लीक नहीं करे, obviously until and unless the cell membrane is damaged or ruptured, right? For that reason, God chose the cell membranes to be made up of lipids. ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे ऑर्गेनल की, and that's this fluid inside this cell, right? अच्छा, अब ये fluid क्या है? This fluid is the cytoplasm, is the protoplasm. ठीक है, अब जब हम लोगों ने इस प्रोटोप्लाज्म को सेल में डाला ना, उसकी लोकेशन चेंज हो गई. जब लोकेशन चेंज हुई तो हम लोगों ने नाम भी बदल दिया. हमने कहा इट्स नॉट द बेसिक फ्लूइड एनीमोर, इट्स अ फ्लूइड ऑफ द सेल. व्हाट डू वी कॉल द सेल इन लैटिन? साइट, राइट? लिम्फोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, राइट? ये सारे जो साइट्स होते हैं, साइट का मतलब क्या होता है? सेल्स. तो हम लोगों ने इसका नाम क्या रख दिया? हम लोगों ने कहा भाई इट्स अ फ्लूइड ऑफ द सेल एंड वी आर गोइंग टू कॉल इट द साइटोप्लाज्म. अब ये साइटोप्लाज्म करता क्या है? we'll see that later. We'll see that later on. अच्छा जी, ना अब हम लोग बात करते हैं, let's talk about the most important organ. Okay, सी थोड़ा सेल को बड़ा करना तो यहाँ से बस, right? So this is enlarge the cell from here. अच्छा, so one organelle that the most important organelle now we'll talk about is this. It's the nucleus. Right? Just to clear out all the cytoplasm from inside of it. All right now. So nucleus. Agar hum log dekhen how does the nucleus looks like? The nucleus pretty much looks like this. So there's this strand-like structures right here. ठीक है? It has its own membrane. काम क्या है nucleus का? So we're going to label it as our third organelle. काम क्या है nucleus का? कि भाई the nucleus controls the activities of the cell. The nucleus controls the activities of the cell. अब ये करता कैसे है? That's something that we're supposed to know. That's something before we end the class. आज हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम न्यूक्लियस तो अच्छे से पढ़ेंगे आज, ठीक है?
We will talk about all the other organelles in the plant cell maybe tomorrow. लेकिन हम लोग न्यूक्लियस आज अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है? Before we could talk about how is the nucleus basically controlling all of this, controlling the activity of the cell, we first need to understand the parts of the nucleus, ठीक है? न्यूक्लियस का जो पहला पार्ट है ना, वो इसकी मेम्ब्रेन है. जिस तरीके से हमारे पास सेल मेम्ब्रेन थी, तो हमारे पास न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होगी वो कौन सी वाली मेम्ब्रेन हो जाएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. We can also call it the nuclear envelope. ठीक है? Whatever says your board. अच्छा. Now the thing is, if I would ask you guys to give me one difference, one visible difference, one difference that you can actually see between the cell membrane and the nuclear membrane, तो क्या बताओगे? ऐसा difference जो दिख रहा हो. That cell membrane is made up of lipids. वो भी nuclear membrane भी lipid से बनी हुई मेरा बच्चा. Partially How permeable. हिबा कैसे? Why do you think cell membrane is partially permeable and the nuclear membrane is not? पहुंच गई हो, you may be correct, I don't know. Because like it's not in liquid form, maybe. Can you see that? मुझे एक वो difference बताओ दिख रहा हो. I don't want to ask you things that you It don't know. should be because the nucleus has all the metabolic reactions, It does. releasing carbon dioxide out of the cell. The nucleus does not do that, but देखो, the thing is, what I'm asking you for is a difference that you can see. Can you see one? Nuclear membrane has gaps in it. Very good. The nuclear membrane has gaps in it. This is the only thing that we can see. The cell membrane, it's not perforated. It's it does not have. It's not porous. The nuclear membrane, on the other hand, has gaps. Very good, bache. It's porous. Now, since it has gaps, do you think that some of the cytoplasm can leak inside of it? It has gaps, right? So anything that has gaps, for example, a sponge, if I would put into any liquid, that liquid would seep in. The cytoplasm. The through liquid is the- too thick for the No, gaps. it would, mera bacha, it would. The cytoplasm does, through these gaps, leak inside the nucleus, right? But once the cytoplasm goes inside the nucleus, it does not remain the cytoplasm anymore, right? देखो, मैंने कहा था कि साइटोप्लाज्म क्यों है? क्योंकि ये सेल का फ्लूइड है, ये सेल के अंदर है. अगर ये न्यूक्लियस में चले जाएगा, अब तो ये न्यूक्लियस का फ्लूइड हो गया. I'm not going to call it a new cytoplasm anymore. I'm not going to call it a cell ka fluid anymore. Instead, I'm going to call it a nucleoplasm. Dekho, why change the name, sir? Why make things complicated for us? We're not making things complicated. We are making ease for ourselves. For example, agar मैं कहूँ ना protoplasm, my protoplasm can be anywhere in the body. Is the protoplasm in the fluid? Sorry, in the tissue? Is it inside the cell? Is it somewhere else? Is it inside the nucleus? मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता है डिटरमाइन करने के लिए. लेकिन अगर मैं कहूँ साइटोप्लाज्म, तो इससे क्या होगा? मुझे पता होगा कि अच्छा, ओके, दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द सेल. ये सेल के बाहर बात नहीं कर रहा. सो वी आर लुकिंग एट द प्रोटोप्लाज्म इनसाइड द सेल. Similarly, अगर मैं बोलूँ कि अच्छा भाई न्यूक्लियोप्लाज्म, so now just by the word, just by the name of it, you know that it's the same thing. It's a plasm, it's a fluid, but where you'll also be getting to know the location. अब for example, इसी तरीके से एग्जाम के अंदर कभी कभार, for example, the examiner asks कि अच्छा बताओ, is the mitochondria located inside the nucleus or outside the nucleus? Yeah, the mitochondria is located in the cytoplasm. So you would know कि अच्छा हमें यहाँ नहीं देखना है, हमें इस जगह पे देखना है. अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि ओके द डीएनए इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, तो अब तुम्हें पता, या इन द न्यूक्लियोप्लाज्म फॉर एग्जांपल, अब तुम्हें पता है कि अच्छा न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, तो हमें यहाँ नहीं देखना है, वी नीड टू लुक हियर. बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. ओके. अच्छा,
Now, so two things done, two things left. अच्छा, अब हम लोग जो बात करेंगे ना, that's the very important thing. Now, I want to talk about these fibers. ठीक है? These fibers that are present inside the nucleus, they are called as chromatin fibers. ठीक है? What's the difference between chromatin fibers and chromosomes? अभी 2 मिनट में पता लगेगा. अच्छा, तो what's special about these chromatin fibers? हम कहते हैं जो chromatin fibers होते हैं ना, either you say they're made up of, या फिर हम लोग कहते हैं कि they contain DNA. ठीक है? Now, if you would have a look at the structure of the DNA pretty much looks something like this. ठीक है? अच्छा, अब as a human, you're not supposed to know this right now, but just for the sake of it, a human cell contains let's say most of the human cells, they contain 46 DNA molecules. अगर मैं अपने cells की या whatever this DNA molecules that I have, अगर मैं उनकी average length लूँ ना, तो मैं क्या देखता हूँ, उनकी average length कितनी आ जाती है? 1.3 meters, तकरीबन 1.5 गज, right? So 1.3 meters, that's nearly 5 feet, 5 or 6 feet, something like that, right? We can Google that later. So मीटर के अंदर एक लंबी सी चीज है. How do you expect it to put inside a cell that is only micrometers? The very same way as we fit threads into boxes, जो बस धागे होते हैं, threads होते हैं, they are also in meters. लेकिन how do we fit them inside those sewing boxes या Danish cookies के डब्बे? We roll them around a reel. अच्छा, अब होता क्या? अब इस चीज को देखो. Let's say मेरे पास ना एक इतना बड़ा थ्रेड है, मुझे इसको कंडेंस करना है, मुझे छोटा करना है, इसको मुझे कॉइल करना है. So if I'm going to coil it, if I'm Twist going it. to twist it, right? It's going to be something like this, isn't it? Now, when I started to coil it, दो चीजें हुई. Number one, उसकी लेंथ छोटी हो गई, and number two, उसकी थिकनेस बढ़ गई. पहले ये थ्रेड की थिकनेस कितनी, इतनी सी है. जब मैंने उसको रोल करा तो क्या हो गया? वो थिकन आउट हो गया. DNA molecules are invisible and they are very long. Now, to make them visible, or chalo, they become visible when they coil up. जब DNA molecules coil up होते हैं ना, they convert into these thickened shorter fibers that we call as the chromatin fibers. हाँ, although whenever the cells have to divide, सिर्फ कब की बात हो रही है? Cells do, when we're talking about when the cells have to divide. Only when the cells have to divide, these chromatin fibers are further going to coil up and are going to give you structures like this. These structures are what we call as chromosomes. तो भाई क्रोमोसोम और क्रोमैटिन फाइबर में फर्क क्या है? सर कोई फर्क नहीं है. क्रोमोसोम्स आर जस्ट थिकर क्रोमैटिन फाइबर्स. अच्छा, डीएनए और क्रोमैटिन फाइबर में फर्क क्या है? सर कोई फर्क नहीं है. डीएनए इज जस्ट कॉइल्ड, क्रोमैटिन फाइबर इज जस्ट कॉइल्ड अप डीएनए. मेक सेंस? बात समझ में आ रही है? इस चीज में कोई मसला? No, sir. ऑल राइट. अच्छा जी, अगर हो तो बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा. नो वरीज अबाउट दैट. अच्छा, अब एक और चीज, वन थिंग दैट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन. भाई जो हमारे पास डीएनए होता है ना, दिस डीएनए इज मेड, या हम कह सकते हैं कि भाई इट कंटेन्स व्हाट? जीन्स. भाई डीएनए कुछ सेगमेंट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज जीन्स. ठीक है? सो एवरीथिंग एल्स लेटर. लेट्स टॉक अबाउट जीन्स. लेट्स टॉक अबाउट, कोने में हम लोग आते हैं और ये हम लोग लिखते हैं कि भाई genes. Probably the first time we heard about this word is grade 6 or something. So before we end the class, how genes पढ़ के आते हैं. Genes क्या होता है? What do you guys know about genes?
Haji, anything. Something you inherit from your parents. Okay, something that you inherit from your parents. Okay, so सबसे पहले जैन ने मुझे बताया कि sir, where are you getting your genes from? You're getting them from your parents. What do they do? Like, It's for protein synthesis. okay, Ariba, protein synthesis, fine. Can you make it more simpler? Like थोड़ा बहुत. it makes individual unique. Mm-hmm. Give me that word. You know that word. Can I call that word? It gives me an individual and a unique characteristic Yes. or a trait, right? तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, इस वर्ड को लिखते हैं कि अच्छा भाई जीन्स करते क्या है. We'll talk about protein synthesis later. Let's talk about these characteristics and the traits. अच्छा जो characteristic और traits होती है ना, they can either be physical, how you look like, or they could either be behavioral, how do you behave. Right, तो पहले physical की बात करते हैं ना. भाई I look like my parents is because I have their genes. I don't look like Aisha's parents. Aisha looks like her parents because she got their genes from them. She does not look like Hiba's parents. Right. So what is this that my parents are giving me? देखो बेटा होता क्या है? The genes that I possess, all of you possess the same genes, right? All the characteristics that I have, mostly all of them, you also have the same characteristics. If I talk about my physical features, my hair, my nails, what are they made up of? They're made up of a protein called as keratin. The color of my eyes, the color of my skin, it's made up of a protein that we call as melanin, right? Similarly, if I talk about enzyme amylase, all enzymes are protein in nature. All of us have that enzyme amylase. Okay. If I talk about when we are born, we don't have calcified bones. हमारी bones इतनी strong नहीं होती हैं. उनके ऊपर बाद में calcium आके जमा होता है. ये जो bones के हमारे facial features की shaping है ना, it's again done by a protein that we call as collagen. Collagen bones के नीचे भी होता है, gums में भी होता है, ligaments, joints में भी होता है. Now all of us have the same collagen, but the collagen in Uzair's face is laid down very differently than it was laid on my face or under my face, under my skin. Oh, not under my skin, under the calcium or the bones. फिर उसके ऊपर कैल्सिफिकेशन हुई तो मेरे फेशियल फीचर्स अलग हो गए, उजैर के फेशियल फीचर्स अलग हो गए. प्रोटीन है, उजैर के पास भी है, सबके पास है, लेकिन हर किसी में ना अलग अलग तरीके से बन रहा है. राइट. अब हम लोग बात करें ना इन जीन्स की. What are my parents giving me in form of these genes are codes. क्योंकि this organism that we are producing via sexual reproduction, भाई इसके जो प्रोटीन्स है ना, चाहे वो स्किन कलर हो, चाहे वो आई कलर हो, चाहे वो ब्लड ग्रुप हो, चाहे वो उसके एंजाइम्स हो, चाहे इसके ज्यादातर हार्मोन्स हो, चाहे उसका फेशियल फीचर्स हो, कोलाजन हो, it should be like us, right? It shouldn't be like any other person. It should be like us. All the siblings are different from each other, but all the siblings are similar to the parents. Do we get this? So genes hai kya? How do we define genes? Genes are basically codes for proteins. ये genes क्या करते हैं? ये genes बताते हैं कि अच्छा ये सेल है, इसको काम करने के लिए अच्छा अब ये वाला प्रोटीन बनना चाहिए, इतनी क्वांटिटी के अंदर बनना चाहिए. They're not making the proteins. They're only coding for the protein. Okay, this individual, this has to produce this proteins. This person is going to produce this much protein and in this way. Okay. Imagine karo, for example, if I had a tire factory, I could produce bus ke tire, I could produce gaadiyon ke tires, I could produce F1 ke tires, I could produce, bus rickshaw ke tires, for example. All these tires are tires. We'll call them tires, but they're different. Now,
I'm as CEO, I'm going to determine कि अच्छा आज के दिन कौन से टायर बनेंगे और किस तरीके से बनेंगे. Let's take another example. Yokohama and Dunlop, they make tires for cars, for the same cars, but they make very different tires. बात समझ में आ रही है? तो देखो जीन्स क्या करते हैं, वो बनने वाली बात तो बाद में ना, वो सिर्फ ये कोड करते हैं कि अच्छा इस इंडिविजुअल के अंदर ये वाला प्रोटीन बनेगा और इस तरीके से बनेगा और इतना बनेगा. यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चों? Do we get it, guys? All right, so we're going to stop here today.